कशासाठी आलोय, काय इथं नेमकं चालू आहे, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहे ना त्या तुम्ही मुलांनी निरीक्षण ऑब्झर्व करायला पाहिजे. ते सगळं जे आहे ते बघायला पाहिजे. मग तुम्हाला खूप काही शिकायला मिळेल आणि मजा पण येईल. आता इथे तुम्ही ऑडिटोरियममध्ये आता बसलेला आहात ते या तर त्याचाच एक भाग म्हणून आपण काही विज्ञानावर आधारित लघुपट, शॉर्ट फिल्म्स किंवा डॉक्युमेंटरीज, माहितीपट किंवा त्याला आपण अनुभवपट पण म्हणतो, ते इथे तुम्हाला दाखवले जाणार आहेत. आणि हे सगळं एक आठवडा जो काही हा फेस्टिवल चालणार आहे त्यामध्ये जर तुम्ही बाहेर बघितलं असेल तर देशाच्या अमृत महोत्सवी वर्षामध्ये 75 वेगवेगळे आपल्या देशामध्ये मोठं योगदान दिलेले असे वैज्ञानिक, त्यांचं मराठीतून एक्झिबिशन बाहेर तुम्हाला बघायला मिळेल. तसंच या देशाच्या वैज्ञानिक प्रगतीमधील जे आहे ते 75 माइलस्टोन्स, मैलाचे दगड, 75 मैलाचे दगड याचे पोस्टरसुद्धा तुम्हाला जे आहे ते दिसतील. काही चांगली पुस्तकं विज्ञानावर आधारित तीसुद्धा तुम्हाला बाहेर बघायला मिळतील. आणि त्याचाच एक भाग म्हणून या सगळ्या फेस्टिवलचा 75 वेगवेगळ्या डॉक्युमेंटरीज, माहितीपट या तुम्हाला या ऑडिटोरियममध्ये जे आहे ते दिसतील. त्यापैकी 2 चित्रपट आपण बघणार आहोत. मुलांना जे आहे ते आता शाळेमध्ये पण पर्यावरणशास्त्र जे आहे ते शिकवलं जातं. प्रदूषणाची वेगवेगळी कारणं जी आहे ती तुम्हाला सांगितली जातात. कार्बन डायऑक्साईडचं किंवा कार्बन उत्सर्जनचं प्रमाण किती वाढतं आहे, कार्बन क्रेडिट किती महत्त्वाचं आहे किंवा ग्रीन हाऊस गॅसेसचं किती महत्त्व आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी तुमच्या शाळेच्या अभ्यासक्रमामध्ये सुद्धा असतात. तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांनी याबद्दल बरीचशी माहिती दिली असेल. आपल्या भारतातील लोक या संदर्भात काय करू शकतात किंवा त्यांनी काय केलं आहे याच्यावर एकूण आज आपल्या या आत्ताच्या उपक्रमाचा फोकस जो आहे तो असणार आहे. 2 वेगवेगळ्या ज्या आहेत त्या डॉक्युमेंटरीज तुम्हाला याच्यामध्ये बघायला मिळणार आहेत. त्यापैकी एक डॉक्युमेंटरी जे आहे ते जे इलेक्ट्रिक व्हेकल आहेत, इलेक्ट्रिक वाहनं जी आहेत त्याच्यामुळे जे आहे ते तुम्ही कशा पद्धतीने जे आहे ते ऊर्जेची बचत करू शकता किंवा प्रदूषणाला जे आहे ते आळा घालू शकता, हे तुम्हाला त्याच्यातून बघायला मिळेल. तसंच आणखीन एका दुसऱ्या डॉक्युमेंटरीद्वारे तुम्हाला भारताने विज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये अशी कोणकोणती मोठी पावलं उचलली आहेत की ज्याचा भारताच्या एकूण विकासामध्ये मोठा वाटा आहे, हे तुम्हाला इथं बघायला मिळणार आहे. सो शांततेत बसून आणि या छानपैकी चालत असलेल्या विज्ञान महोत्सवाला जे आहे ते छान प्रतिसाद द्या आणि जे काही तुम्ही बघताय त्याच्यावरती जे आहे ते लक्ष ठेवून जर तुम्ही त्याच्यातलं काही टिपण काढू शकला, काही लिहू शकला किंवा तुमच्या इतर मित्रमैत्रिणींना सांगू शकला तर नक्कीच सांगा. बाहेर खूप सारे असे वैज्ञानिकांचे, शास्त्रज्ञांचे जे आहे ते फोटो किंवा माहिती आहे जी आपण याच्या आधी कधीच ऐकली नव्हती, ती तुम्हाला बघायला मिळेल आणि कदाचित मग तुम्ही त्याबद्दल जे आहे ते आणखीन कोणाला सांगू शकाल. तर तो प्रयत्न तुमचा असू द्या. डबा खाऊन झाला असेल तर डबा आता बंद करा. आपल्या ऑडिटोरियममध्ये डबा खाणं जे आहे ते अलाउड नाही आहे, त्याच्यामुळे डबा बंद करा आणि आपलं पूर्ण लक्ष जे आहे त्या माहितीपटाकडे असू द्या. साठे महाविद्यालयातर्फे मी तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा इथे स्वागत करतो. धन्यवाद. भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है और 2021 तक इसके तीसरे नंबर पर पहुंचने का अनुमान है. लेकिन इस विकास के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं. सड़क पर ज्यादा गाड़ियों का मतलब है ज्यादा उत्सर्जन और अधिक प्रदूषण. भारत अपनी तेल की खपत का 83% आयात करता है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है. यही वजह है कि 2030 तक 30% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है. लेकिन हम इसे हासिल कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक वाहनों को बनाने की हमारी विनिर्माण क्षमता क्या है? इन वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए हम चार्जिंग जैसी बुनियादी ढांचे की
स्थापना कैसे करेंगे? जहां तक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का सवाल है, इसमें भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भरता कैसे हासिल करेगा? भारत में वाहन प्रदूषण फैलाने के बड़े कारकों में शामिल हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों का उत्सर्जन वायुमंडलीय प्रदूषण में 60% पार्टिकुलेट मैटर और CO2 का 20% से अधिक योगदान है। भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली लगभग 2/3 मौतों में डीजल वाले वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन का भी अहम रोल है। इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवीज एक सकारात्मक और टिकाऊ उपाय है। ये पूरी तरह बिजली से चलते हैं और इनसे घातक हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है। भारत में ईवी विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कई प्रभावी नीतियों को लागू कर रही है, जिससे इस क्षेत्र को मदद मिल सके। आत्मनिर्भरता की हमारी इस यात्रा में भारत के इस क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनने की उम्मीद है। इस यात्रा में हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। वे भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया उद्योग में अग्रणी हैं। 10 साल पहले इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स का निर्माण शुरू किया था। When we launched effectively in 2007, जब हमने 2007 में अपने व्हीकल्स को लॉन्च किया था, तब हमने एक कंपनी अलग से लॉन्च की थी। उसके लिए एक अलग टीम थी जिसका पूरा फोकस इस सेक्टर पर केंद्रित था। हम ये नहीं चाहते थे कि वो सहायक कंपनी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सा हो जिसका इस सेक्टर में कोई हाथ हो, क्योंकि हमें इस सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। उस समय यह हमारे पारंपरिक बिजनेस से अलग थी और ये बात पिछले कई सालों से साफ थी कि हमें पोल्यूशन फैलाने वाले वाहनों की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने चाहिए। cleaner vehicles. We have to move away from polluting vehicles. एक ईवी कैसे काम करता है? सभी इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी में एक आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। बैटरी में इकट्ठा की गई बिजली मोटर को चलाती है। आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों में सबसे बड़ा फर्क यही है। इसमें इंजन ऊर्जा पैदा करने के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग करता है, लेकिन ईवी में इंजन और ट्रांसमिशन की जरूरत नहीं होती। ये दोनों चीजें आंतरिक दहन वाले वाहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। वाहनों में कोई दहन नहीं होता, इसलिए किसी प्रकार का उत्सर्जन नहीं होता, जैसा कि पेट्रोल वाले दोपहिया वाहनों में होता है। वाहनों में कोई इसमें इंजन वाले पुर्जे का घर्षण नहीं होता। इसमें बस बिजली की मोटर ऊर्जा को It's basically a battery which is rechargeable. इसमें मूल रूप से एक बैटरी है जो रिचार्ज की जा सकती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तकनीक का उपयोग करेंगे। एक बैटरी को हजारों बार रिचार्ज किया जा सकता है। यह कई सालों तक चलती है। यह काफी स्वच्छ वाहन है। इससे उत्सर्जन बिल्कुल नहीं होता। बेहतर ड्राइविंग होती है। इसमें कोई कंपन नहीं होता। हमारे वाहनों की सभी बैटरियां पोर्टेबल हैं। इन्हें ऑफिस और घरों में रिचार्ज किया जा सकता है। पेट्रोल पंप तक जाने की जरूरत नहीं है और न ही किसी सर्विस स्टेशन पर जाना है। And it gives you clean mobility. इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे अच्छी बात यह है कि इससे उत्सर्जन में भारी कमी आई है। इससे हमारे शहरों में हवा स्वच्छ रहती है और लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। पेट्रोल पर चलने वाली पारंपरिक मोटर बाइक की तुलना में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की खरीद और रखरखाव दोनों किफायती हैं। इलेक्ट्रिक वाहन को असेंबल कैसे किया जाता है? पहले स्टेशन में एक फ्रेम होता है जिसे चेसिस भी कहा जाता है। चेसिस के लोड पर उसमें एक कन्वर्टर और नियंत्रक जोड़ा जाता है। नियंत्रक ई बाइक का दिमाग होता है। सभी इलेक्ट्रिक सिग्नल, बजर, हेडलाइट और संकेतक कन्वर्टर के माध्यम से नियंत्रक तक जाते हैं। कन्वर्टर उच्च वोल्टेज को लो वोल्टेज यानी 12 वोल्ट में परिवर्तित करता है और इसकी वाहन के विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में आपूर्ति करता है। दूसरा स्टेशन मोटर होता है। मोटर से ही वाहन चलता है। इसे हब में पिछले पहियों के पास लगाया जाता है। स्टेशन में टायर लगे
आगे अगले पहिए लगाए जाते हैं। इसमें हैंडल को जोड़ा जाता है। मुख्य हार्नेस फिट किया जाता है। ये पूरे वाहन को सूचना प्रेषित करने और विभिन्न घटकों को जोड़ने से चलता है। इसके बाद प्लास्टिक से बने हेडलाइट और साइड पैनल जैसे विभिन्न भागों को लगाया जाता है। ये सब असेंबल होने के बाद सीटें लगाई जाती हैं। फिर लिथियम आयन बैटरी को जोड़ा जाता है। ये असेंबली का अंतिम चरण है। ये लिथियम आयन बैटरी पोर्टेबल होती है। असेंबली पूरी होने के बाद वाहन विभिन्न गुणवत्ता जांच बिंदुओं से गुजरते हैं, जहां वाहन के हर मानक की जांच की जाती है। मैनुअल जांच के अलावा हर मानक को इलेक्ट्रिकल डायनेमो मशीन में जांचा जाता है। आखिर में वाहन तैयार होकर फैक्ट्री से बाहर आता है। सिंह नई दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। हाल ही में उन्होंने ऑफिस जाने का अपना साधन बदला है। अब वे इलेक्ट्रिक स्कूटर से ऑफिस जाते हैं। I personally feel it is quite. मुझे लगता है कि यह काफी किफायती है और पर्यावरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता। यह एक बार रिचार्ज करने पर आसानी से लगभग 50 किलोमीटर तक चलती है। मुझे इसके रेंज के बारे में कभी कोई समस्या नहीं हुई। I never had any issue regarding it. भारत में टू व्हीलर का एक विशाल बाजार है। सरकार द्वारा ई मोबिलिटी को बढ़ावा और सब्सिडी देने पर 19 से 2025 के दौरान इस चौवा क्षेत्र में ई क्रांति की काफी संभावनाएं हैं। आने वाला वक्त स्वच्छ मोबिलिटी का ही है। इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए ई वाहनों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उदाहरण के लिए अब टू व्हीलर में पोर्टेबल बैटरी का उपयोग होता है, जो काफी सुविधाजनक है। इस तरह से स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन देने से हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। हमारी वायु स्वच्छ बनती है। आयातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता कम होती है और इससे हमारे आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को बल मिलता है। We were already working on localization, but now what's happened, it's pushed the whole industry. So it's creating. ये वाहन प्रदूषण नहीं फैलाते, सुविधाजनक हैं, उपयोग में आसान हैं और ये आपको स्वच्छता से आने जाने की सुविधा देते हैं। हम पहले से ही स्थानीयकरण की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इस पूरे उद्योग का मानकीकरण और स्थानीयकरण करने पर जोर दिया गया है। पहले जो उद्योग भारत में नहीं थे, वे अब अपनी जगह बना रहे हैं। कई तकनीकी उत्पाद ऐसे होंगे जिनका निर्माण अब भारत में ही होगा, इसलिए उस दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम है। Down to the raw materials, we could have them either coming from India or being mined or सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक इस प्रक्रिया का सिर्फ एक चरण है। इलेक्ट्रिक वाहन में लगने वाली बैटरी जैसे घटक उसकी लागत को 50% तक बढ़ा देते हैं। देश जैसे जैसे स्वच्छ मोबिलिटी की ओर अगर घरेलू स्तर पर बैटरियों की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो भारत से निर्भर देश बनने की बजाय बस एक तेल निर्भर देश बनकर ही रह जाएगा। इसलिए एक ब्रेक के बाद भारत सरकार ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने पर काम कर रही है। कुछ योजनाओं में तो वाहनों को 2030 तक 100% इलेक्ट्रिक करने का विजन भी है। लेकिन इसे हासिल करने के लिए हमें लिथियम आयन बैटरी के विकास और निर्माण को स्वदेशी रूप से आगे बढ़ाने की जरूरत है। फिलहाल भारत ईवी बैटरियों की सोर्सिंग के लिए अन्य देशों पर निर्भर है, जिसकी वजह से ये वाहन महंगे हुए हैं। इस परिस्थिति को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम स्वदेशी रूप से इन बैटरियों का निर्माण करें। चलिए लिथियम आयन बैटरी को और विस्तार से देखें। यह मुख्य रूप से 4 घटकों से बनी है, जो कैथोड, एनोड, इनके बीच इलेक्ट्रोलाइट नामक एक रसायन और एक विभाजक है। एनोड और कैथोड लिथियम का संग्रह करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट धनात्मक रूप से आवेशित लिथियम आयन को एनोड से कैथोड तक ले जाता है और ठीक इसका उल्टा विभाजक के द्वारा होता है।
लिथियम आयन की गति एनोड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करती है, जो धनात्मक करंट संग्राहक में एक चार्ज बनाता है। फिर विद्युत प्रवाह करंट संग्राहक से ऋणात्मक करंट संग्राहक तक संचालित होने वाले उपकरण के माध्यम से प्रवाहित होता है। विभाजक बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। बैटरी डिस्चार्ज होते समय करंट छोड़ती है। एनोड कैथोड में लिथियम आयन जारी करता है, जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जब डिवाइस में प्लग लगाया जाता है, यही क्रिया उल्टी हो जाती है। लिथियम आयन कैथोड जारी करता है और एनोड उन्हें हासिल करता है। लिथियम के आणविक बॉन्ड में बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी की जा सकती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी में उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। एक विशिष्ट लिथियम आयन बैटरी 1 किलोग्राम बैटरी में 150 वॉट घंटे बिजली स्टोर कर सकती है। ये बैटरी आमतौर पर दूसरी रिचार्जेबल बैटरियों की तुलना में बहुत हल्की होती हैं। इनका उपयोग पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों और यहाँ तक कि बिजली स्टेशनों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। भारत में लिथियम आयन बैटरी विनिर्माण उद्योग अभी अपनी शुरुआती अवस्था में है। हालांकि देश में अगले कुछ वर्षों में इन बैटरियों के प्रमुख निर्माता के रूप में उभरने की क्षमता है। ओकाया पावर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां इन बैटरियों के विकास की कहानी में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। ये लगभग 30 सालों से भारत में कई तरह की बैटरी बना रही है, जिसमें इन्वर्टर बैटरी, सोलर बैटरी और ई रिक्शा बैटरी शामिल हैं। अब इस कंपनी ने राष्ट्रीय ई मोबिलिटी मिशन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाने के लिए लिथियम आयन बैटरी और ईवी चार्जिंग सुविधाओं का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ओकाया पावर ग्रुप में हमारा विजन काफी साफ रहा है। हम घरेलू के साथ साथ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल स्टोरेज और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, स्टोरेज बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन में भी मोबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य ऐसे उत्पादों को बनाना है जिनसे वास्तव में हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए एक स्थायी समाधान देने में मदद हो सके। कोविड महामारी के दौरान यह महसूस किया गया कि भारत को विदेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कम निर्भर रहने की जरूरत है। इसलिए सरकार ने एक आत्मनिर्भर भारत के विचार को अपनाया है। इस दिशा में एक कदम कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना था। भारत सरकार ने लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क बढ़ाया है। इस टैरिफ बढ़ोतरी ने चीन जैसे देशों से इन बैटरियों के आयात करने की लागत को और बढ़ा दिया। उन्होंने स्वदेशीकरण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ घटकों की आयात लागत को भी कम किया है। इसने उन भारतीय कंपनियों को प्रेरित किया है जो इन बैटरियों को विकसित करने के लिए अपनी विनिर्माण और कौशल क्षमताओं पर जोर दे रही हैं। बैटरी बनाने के अपने गहन अनुभव के साथ ओकाया के पास ई वाहनों के लिए लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी विशेषज्ञता और संसाधन है। लिथियम आयन बैटरी निर्माण की समग्र प्रक्रिया में सेल घटकों यानी इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट्स और सेपरेटर, सेल और मॉड्यूल उत्पादन, बैटरी पैक असेंबली और घटकों के एकीकरण का उत्पादन शामिल है। ई वाहन की लिथियम आयन बैटरी की असेंबली और विनिर्माण हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित उनके कारखाने में होता है। इसकी प्रक्रिया एक सेल क्षमता मशीन में एक एक सेल के परीक्षण से शुरू होती है। परीक्षण किए गए सेल को असेंबली टेबल मेज पर लाया जाता है। यहाँ सेल को एक लाइन में ऋणात्मक व दूसरी लाइन में धनात्मक अनुक्रम में रखा जाता है। फिर सेल को एक स्वचालित स्पॉट वेल्डिंग मशीन में डाला जाता है, जो सेल को निकल स्ट्रिप्स के साथ जोड़ती है। फिर BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को असेंबल किया जाता है। ओकाया अपना BMS खुद बनाती है। फिर तारों को BMS से जोड़ा जाता है। इसे वायर हार्नेसिंग कहा जाता है। इसके बाद BMS सेल से कनेक्ट हो जाता है। फिर बैटरी पैक टेस्टिंग मशीन में पूरी बैटरी का परीक्षण किया जाता है। टेस्ट पास करने के बाद बैटरी को पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। हमारे पास खुद का इलेक्ट्रॉनिक BMS है, जिससे प्रत्येक सेल के प्रदर्शन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और यह उस मोटर के आउटपुट को भी नियंत्रित करता है जो वाहन को आगे बढ़ाने के लिए करंट लेती है। उसके ऊपर इसमें बहुत से सुरक्षा तंत्र लगाए गए हैं, चाहे वह थर्मल कंडक्टिविटी हो
जो कि ताप को नियंत्रित करता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन हो जो इसे एक सुरक्षित बैटरी बनाने के लिए काम करता है। सरकारी योजनाओं के समर्थन से इस तरह की प्रौद्योगिकी और नवाचार वास्तव में इलेक्ट्रिक बैटरी के निर्माण को गति प्रदान कर सकते हैं। ये हमारे ई मोबिलिटी आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हमें 100% भरोसा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए न सिर्फ हमारी कंपनी बल्कि कई अन्य कंपनियां मिलकर जहां तक हो सकेगा स्वदेशीकरण के लिए काम करेंगी, और मुझे वास्तव में लगता है कि यह उपभोक्ता को उत्पाद की ओर तेजी से आने में मदद करने वाला है, क्योंकि कीमत उनकी पहली प्राथमिकता है। उनमें जागरूकता है और उत्पाद उपलब्ध है। लेकिन अब यह केवल लागत का मामला है जिससे हम पार पा लेंगे। इससे हम छोटे शहरों में भी उपलब्ध कराएंगे। इसमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। ई वाहनों का निर्माण और हमारी ई बैटरी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना दोनों महत्वपूर्ण कदम हैं। एक ब्रेक के बाद हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से भारत ने बुनियादी ढांचे को फिर से विकसित किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और स्वदेशी रूप से बैटरी बनाने की तकनीक को बढ़ावा दिया है। दोनों कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब तक हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्थानांतरित होने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प जमीनी स्तर पर मुमकिन नहीं होगा। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में चार्जिंग का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए ठोस उपयुक्त नीतियां और नियम बनाने की जरूरत है। मई 2019 में हुए इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के मुताबिक भारत में 90% कार मालिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के इच्छुक हैं। फिलहाल भारत में कुल वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार केवल 1% है। यही वो क्षेत्र है जहां EESL यानी ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड जैसी कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। EESL का अधिदेश ऊर्जा कुशल परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने से संबंधित है और उपभोक्ताओं, उद्योगों और सरकारों को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से अपनी ऊर्जा जरूरतों का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना है। EESL ऐसा करने के लिए देश में ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने और जरूरी ईवी चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए माहौल बनाने पर काम कर रहा है। उदाहरण के लिए भारत में ई वाहन के उद्योगों को आगे बढ़ाने की दिशा में उन्होंने सरकारी संगठनों में 1500 से अधिक ई कारों की खरीद और तैनाती की है। इन ई कारों को सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा पेट्रोल और डीजल वाहनों को बदलने के लिए लीज पर दिया जा रहा है। जब हमने ईवी कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य ऐसा बाजार तैयार करना था जिसमें यह सुनिश्चित करना था कि ईवी की विशेषताएं और लाभ लोगों तक पहुंचे। और इस पहल में हमने सबसे पहले सरकारी वाहनों के बेड़े को विद्युतीकृत करने का काम किया। अब हम ये वाहन ई टैक्सी ऑपरेटर को उपलब्ध करा रहे हैं और चार्जिंग की सुविधा भी मुहैया करवा रहे हैं। ईवी के फायदों का उपयोग करने और अन्य उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए EESL ने देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े पैमाने पर तेजी से काम किया है। चार्जिंग बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए पूंजी की मुख्य आवश्यकताओं में से एक है जमीन की उपलब्धता, जो अब तक अधिकांश नगर निकायों या फर्मों द्वारा सार्वजनिक चार्जर के लिए EESL को मुफ्त दी जाती हैं। अब तक EESL ने इस पर आगे बढ़ने की योजना के साथ 350 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए EESL स्थानीय निकायों, संस्थानों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी कर रहा है। इन चार्जिंग स्टेशनों को बनाते समय एक महत्वपूर्ण चुनौती ऐसे उपकरणों का विकास है जो तेजी से चार्जिंग कर सकते हों। विभिन्न कारों के लिए विभिन्न प्रकार के कनेक्टर के भी विकल्प हैं।
हमारे पास कई तरह के चार्जर हैं। महिंद्रा ई वेरिटो जैसे कम रेंज की कारों के लिए इनमें लगभग 120 से 140 किलोमीटर की यात्रा की जा सकती है। ये DC 001 15 किलोवाट के चार्जर हैं। हमारे पास उच्च रेंज की कारों के लिए भी चार्जर हैं। इसके लिए हमारे पास 142 किलोवाट से अधिक के भी चार्जर हैं। EESL द्वारा स्थापित चार्जिंग स्टेशन ग्राहकों के अनुकूल हैं और इसका उपयोग इलेक्ट्रीफाई नामक मोबाइल एप्लीकेशन की सहायता से किया जा सकता है। केवल यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करके उपयोगकर्ता अपने वाहन के अनुकूल निकटतम चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकता है। फिर चार्जर पर QR कोड को त्वरित स्कैन करके उपयोगकर्ता ये चुन सकता है कि वो कार को कैसे चार्ज करना चाहता है, बैटरी की क्षमता के हिसाब से, समय के हिसाब से या फिर यूनिट या पैसे के हिसाब से। उसके बाद चार्जर को वाहन के स्लॉट में प्लग किया जाता है और उसे चार्ज किया जाता है। यदि आप दिल्ली में डीजल या पेट्रोल कार चला रहे हैं तो उसकी लागत प्रति किलोमीटर लगभग ₹6.5 है। अगर आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन को ₹10 प्रति यूनिट पर चार्ज कर रहे हैं तो उसकी लागत केवल ₹1.10 आती है। अब अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इसे ₹3 प्रति यूनिट पर चार्ज करने की कल्पना करें तो ये किसी क्रांति से कम नहीं होगा। EESL का इरादा सोलर रूफटॉप, बैटरी आधारित चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का निर्माण करके कार्बन न्यूट्रल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। आखिरकार इस कंपनी की योजना देश भर में अगले 2 से 3 वर्षों में 10,000 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की है। भारत सरकार ने इन स्टेशनों के लिए सब्सिडी के रूप में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये एक प्रक्रिया है जिसका अनुसरण भारी उद्योग विभाग कर रहा है। इसके तहत पहले ही 2600 चार्जिंग स्टेशन आवंटित किए जा चुके हैं और 14 राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के लिए बोली लगाई जा रही है। शुरू में विचार यह है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और राज्यों की राजधानी में इन्हें लगाया जाए ताकि हमारे पास पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हों और ईवी के नए मॉडल लाने में OEM को भी काफी दिलचस्पी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने GST में कटौती, रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क को कम करके इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। अगर हम लोगों को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम 2-3 चीजें हासिल कर सकते हैं। पहला, हम आत्मनिर्भर बनते हैं। दूसरा, हमारे परिवहन को चलाने वाली यह ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल होगी। निर्यातित जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता के मामले में भारत में सड़कों पर ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन गेम चेंजर साबित होंगे। इससे राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण में सुधार होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ईवी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों का मिलकर काम करना वास्तव में एक ऐसा उदाहरण है जिससे हमारा भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बन सकता है।
Unraveling the mysterious universe and understanding its structure has been an insatiable curiosity of mankind. India has a long history of astronomical scientists. Aryabhatta, who interpreted that the earth rotates about its axis. Brahmagupta, who gave the formula for cyclic quadrilateral, used often in astronomy, and Bhaskara, who determined the parallax in longitude. In the recent times, Subramanian Chandrasekhar, Jayant Narlikar and Meghnad Saha are among a few Indian astrophysicists who took the world by surprise with their cosmic discoveries. Holding the proud legacy, our scientists are an integral part of the world's biggest mega science projects. Mega science projects for the between team researchers. While the scientific goals are significant, benefits are equally important. By collaborating, participating and delivering components for these giant projects, India places it. In addition, these projects have the potential to create new avenues for science industry collaborations and to popularize science in the country. Let us analyze India's contribution in various mega science. One of the most important mega science projects is Cern, by the European Organization for Nuclear Research. At present, the biggest database collector of the universe, Indian astronomers form the pillar to its research and development. Established in 1954, Cern is based in the northwest suburb of Geneva on the Franco-Swiss border and is into nuclear research and probing the fundamental structure of the universe. With India becoming an associate member, our League of Indian Scientists has joined the team to interpret the cosmos. With the capability of executing large-scale projects, our scientists are associated with some of the most prestigious projects at Cern. The design of Large Hadron Collider, world's largest and most powerful and largest particle collider, is a handiwork of many Indian scientists, and its construction with infinite precision is being taken care of by scientists and engineers in the Indian industries. Large Hadron Collider smashes groups of protons together at close to speed of light 40 million times per second, with 7 times the energy of the most powerful accelerators built up till now. One of the 7 important experiments executed by Large Hadron Collider is ALICE. This experiment is optimized to study heavy ion collisions, creating plasma similar to that existing fraction of a second after the Big Bang. Quantum chromodynamics is a theory that describes the properties of the strong interactions between quarks and between protons. It predicts that at sufficiently high energy densities, there will be a phase transition from conventional matter, where quarks are locked inside nuclear particles. Quarks are subatomic particles having electric charge. The reverse of this transition is believed to have taken place when the universe was very young. The hardware for the photon multiplicity detector of ALICE has been entirely designed and fabricated by Indian scientists, from conception to commissioning. In one of the 2 experiments to discover the God particle, Higgs boson, Indian scientists have played a major role in the CMS experiment. Dr. Archana Sharma, better known as CMS Lady worldwide, explains. We have to look for signatures of particles that existed at the time of the Big Bang but do not exist anymore in nature, like the Higgs boson. So we recreated conditions of the Big Bang, which means we created the available energy so that the Higgs boson could be created, and it will decay immediately because it's not a stable particle. CMS is a particle detector that is designed to see a wide range of particles and phenomena produced in high energy collisions in the LHC. Like a cylindrical onion, different layers of detectors measure the different particles and use this key data to build up a picture of events at the heart of the collision. This data is used to search for new phenomena that will help to answer fundamental questions like, what is our universe really made of? And what are the forces acting within it?
CMS will also measure the properties of previously discovered particles with unprecedented precision. Indian scientists have also contributed substantially to the building and operation of the Large Hadron Collider grid. The global collaboration of more than 170 computing centers in 42 countries, linking up national and international grid infrastructure. The objective of the project is to provide global computing resources to store, distribute and analyze the 50 to 70 petabytes of data expected every year of operations from the Large Hadron Collider at Cern. My target was to get in the biggest back in Bangalore. They have made a large number of elements of this detector, and in the future my target is that the complete detector can be made in India. The first of this detector installed in 2019. The second station will be installed in 2020, and in this we will install 144 detectors. In 2022, in 2025, we will install 216 detector modules. So there's a huge amount of work that's happening, and in India, we not only have the technology transfer, but we also have 4 laboratories equipped with all the quality control measurement infrastructure that we have established at Cern that validate these detectors to be certified for installation into CMS. India as an important contributor to mega science projects is helping greatly in the development of new products, services and new ideas. One such product is the creation of world's biggest ground-based optical and infrared telescope of 30-meter diameter aperture. It is a result of the quest for understanding fundamental issues like the possible existence of life beyond the solar system, the dark energy, believed to be causing expansion of the universe to accelerate, and many other astrophysical phenomena like formation of planetary systems and formation and evolution of stars and galaxies. TMT would enable Indian astronomers to study front-ranking scientific problems such as formation and evolution of stars, planets and galaxies. India has collaborated with the US, China, Canada and Japan to build the TMT at an estimated cost of about $1.47 billion. With this, India is set to contribute in making its very crucial components for the telescope. In fact, many crucial parts of the telescope are already being fabricated at various institutes across the Department of Science and Technology and Department of Atomic Energy. The Indian science sector will benefit both scientifically and technologically. It will bring in the know-how for new and cutting-edge technologies and will make possible gathering information about early stages of evolution of the universe. The telescope is a 30-meter diameter, and 30-meter diameter is not one single meter. You cannot make a single meter of 30 meter. Casting itself is difficult, and then putting there and then moving around the sky is much more difficult because it sags, one single meter. And also to transporting, you cannot make a 30-meter transporting. So this is now built as a segments. So it has a 492 segments. Each segment is 1.45 meter diameter. And these are going to be aligned, and then I have to make them all act as a single mirror. To make them act as a single mirror, and then you need to have sensors. They sense during the night when you are chasing the stars across the sky, and the telescope has to move from one position to another position. So during that time, things happen. Okay, the gravity changes where they are. Some mirror will be somewhere else, 30 meter away. Another mirror is here, and then because of the temperature changes, and the height changes, so there is going to be a change in the position of the mirrors, relative positions from one mirror to another mirror.
So each mirror is going to be attached some 6 sensors. What these sensors do is they sense the relative displacement of these segments. Okay, whether they are how much the displacement is. So that entire sensor thing is India's part. You can collect more light from these objects, celestial objects, and basically, suppose if you want to see the object which we cannot detect with a smaller telescope, so this can be seen with the help of 30-meter aperture. So the sensitivity of the telescope, which increases with the diameter, and the image sharpness increases when the aperture increases. So these two together, the sensitivity of the telescope increases a lot. So once this displacement information is gathered by the sensor, then sent to the actuators, and then the actuators, what they do, they nudge these mirrors. There is some displacement from, nudge that mirror, go slightly up or down, something like that. So the entire actuators we are making in India, so those are some 1600 actuators we have to make. It is also set to give finer details of not so far away objects like undiscovered planets and other objects in the solar system and planets around other stars. 30-meter telescope, being the largest optical and infrared telescope in the northern hemisphere, will enable several discoveries which will surely inspire future generations. The project will also provide state-of-the-art high-end technologies to the country, which would benefit a number of industries and research and development centers of India. The monolithic mirror, the maximum size in the conventional telescope which is available across the globe is 8-meter class. So the difficulty in making bigger than 8-meter class is making the mirror. So monolithic mirror, anything bigger than 8 meter is difficult. One is that the fabrication facility, and another one is that handling the mirror, supporting the mirror, because when you go for the bigger mirror, so its weight increases, which needs a totally a complex supporting system, and its thermal inertia increases, and various other problems come into the telescope. And the mirrors are going to be fabricated in our optics facility. The facility is coming up in one of our campus. It's called Crest campus of IIA. So the segments are going to be produced there in the facility using a special technique. It's called stress mirror polishing technique. And the metrology tools in the stress mirror polished. The completed early construction phase and is expected to be operational in early 2020s in Mauna Kea on the island of Hawaii. While India is collaborating with the international scientific fraternity to conquer space, telescopes, Vanubapu telescope with a 2.34 meter diameter mirror at Kavalur Observatory in Tamil Nadu was commissioned in early 80s. It could easily resolve a 25 paise coin kept 40 kilometers away. Each sky could be carried out with this telescope. The world-class 3.6 meter Devasthal optical telescope, another feat achieved in this field, was remotely activated jointly by the Prime Minister of India and the Prime Minister of Belgium in 2016. Located at Devasthal near Nainital, it is the largest steerable imaging telescope in Asia, which is a result of scientific collaboration between the team of scientists from Aryabhatta Research Institute of an autonomous institution of DST, and the Belgian scientists. In 1980, when I joined this observatory, there were plans to have larger telescope, but it was realized that the larger telescope cannot be put here because of
expected light pollution. So site survey to find out some good site, and after long experiments, long observations, the Devasthal site was found suitable for a larger telescope. Now where we have a 3.6 meter telescope. Located at higher altitude in the central Himalayas and away from big cities, Devasthal is best suited for carrying out observations in background condition and to study the regional environment, particularly interactions between the natural and anthropogenic tree species and climate change. The telescope will contribute to the observations for frontline scientific research in astronomy and astrophysics. It features an optical spectrograph, a CCD imager, and a near-infrared spectrograph. With regard to Devasthal, the prevailing wind throughout the year is from southwest, and in about 5 kilometer radius of this site, there is no peak higher than this peak, and hence there is no wind sake. So due to this laminar airflow at Devasthal site, we measured and we got the seeing of 1 arc second. That is the kind of median seeing we got. And since we have established the telescope that is about 10 meter above the ground level, so the effect of free air seeing has reduced further. So in fact we are able to see the effect of seeing only to the level of 0.3 to 0.4 arc second, not more than that. So as a result, this telescope is capable of giving you images of sub-arc second. The telescope is also the first of its kind in India that features an active optic system which compensates for small distortions in the shape of 4.3 ton mirror due to gravity or atmospheric aberrations. The polarization measurements help understand the nature of some of the stellar and extragalactic sources. Light from astronomical objects is in general polarized to some degree, and its measurement gives additional information related to the magnetic field, the distribution of scattering material, and the non-thermal nature of light. If the light will be polarized in a particular angle, the intensity will be increased. The polarized light comes to you. The source is there. Source is not an instrument. Instrument has just to find it out whether the light coming from the star is a polarized or not. So if the light coming from the particular object or a star is a polarized, then you are able to see what is the source of the polarization is there. If the source of the polarization is, for example, say scattering or say the reflection, so we are able to see that what kind of the sources are there. If it is a scattering, that means some material is in front of that particular star which is scattered and giving the polarized light. That is light vibration along the one direction. Okay, so if you have this, then you are able to study that particular object in more detail. To achieve a good signal-to-noise ratio, the 3.6 meter Devasthal optical telescope also uses polarizing filter. Indian scientists with their knowledge and expertise have been recognized all over the world. It is no surprise that they were equally part of the team that won the Nobel Prize of the Millennium for gravitational waves. It was a direct detection of gravitational waves arriving from the merger of two large black holes in a distant galaxy a billion light years away. Though the Nobel Prize was given to Rainer Weiss, Kip Thorne, and Barry Barish, but behind this historic discovery was the dedicated work of 39 Indian scientists from several Indian institutions. The group led by Professor Sanjeev Dhurandhar and Professor Tarun Sauryadeep at Ayuka initiated and did foundational work on developing data analysis techniques to detect the weak signals buried in the detector noise. The first paper which we wrote in 1991 with Dr. Satya Prakash, was actually gave this, that it was the simplest waveform, just first one term in that post-Newtonian expansion, and we use simple noise and so on, simple noise model and so on,
But important thing is that we gave the procedure, how to laid down the procedure, how to go about extracting this particular signal from the noise. And now the procedure which has been used in the discovery is in fact a refinement of this thing. The group led by Professor Bala Iyer at the Raman Research Institute in collaboration with scientists in France had pioneered the mathematical calculations used to model gravitational wave signals from orbiting black holes and neutron stars. Current story of gravitational wave detection begins with the discovery of pulsars in 1967. Pulsars are like celestial clocks and allow us to make very accurate measurements of stellar systems. This led in 1974 to the discovery of a system called the binary pulsar. Two neutron stars going around each other, and if Einstein was right, they would emit gravitational waves and eventually sort of coalesce. Without these valuable contributions, discovering gravitational waves would have been near impossible. Our technical know-how catapults every project and brings it to its trajectory. Taking the same theory of gravitational waves forward, Indian scientists are designing an advanced gravitational wave observatory. This project is a collaborative project between a consortium of Indian research institutions and the LIGO laboratory in the USA, along with its international partners Australia, Germany and the UK. LIGO India bring forth a real possibility for Indian scientists to step forward into the frontier of an emergent area of high visibility to probe the universe. The site selection was a mammoth effort. It took 5 years. So from 2011 end, we've been looking at sites. We followed about 40 site leads all over India. The main challenge was we needed stable ground in terms of low seismic noise. So you have to go to places which are known to be, stable and the low seismic risk zones. Secondly, we also needed to be away from people. And that's a challenge because we also need people to run such a big facility. So we had to balance between finding a place which was reasonably big so that people would love to work there, but remote enough that there are no disturbances. We can't have roads within 10 kilometers of the site. The fact that this location is in India, is its biggest plus points because it's far away from all other detectors. The US detectors are almost from the other side of the earth. So this is almost the biggest baseline that we can get for a network of detectors. The aim is to set up global advanced LIGO detector network by 2024 that will be operational for 10 years. With zeal, determination and immense opportunities opening for astrophysics both in national and global front, it won't be long when our scientists will dominate the world arena with their hypotheses and discoveries, devising their technological know-how to make our country proud. The various technology transfers in India, driven by innovations from our scientists, also open gates to welcome large foreign investments and large investment flow into the country. With the recent breakthroughs in the astronomical world, India, with its exemplary technical capability, not only takes a leading role in executing large-scale projects, but also goes several notches up globally in terms of research and discoveries. Please mail your feedback on feedback@indiascience.in. You can also write to us on Vigyan Prasar, A50 Industrial Area, Sector 62 Noida, Uttar Pradesh 201309. For more information about our programs, please visit our website www.vigyanprasar.gov.in.